Hello children, welcome to class 6. Subject English, Unit 1. Who did Patrick's homework? Okay. Now, in the previous sessions, I have explained this lesson and today we will discuss about the new words of this lesson. Let's see the first word. Nintendo. Listen carefully all the words. Nintendo means a video game. Next, ignoramus. Ignoramus means an ignorant person who lacks education. An ignorant person who lacks education, कि जिसमें ज्ञान की कमी होती है. Again, ignoramus means an ignorant person who lacks education. Yelled. Yelled means shouted. Breeches. Breeches means a short trouser. Hamper. Hamper means a basket with a lid. A basket with a lid. ढक्कन वाला जो बास्केट आता है उसे हैम्पर कहते हैं. Grimaced. 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 Scowled. Pursed. Grimaced. Scowled. Pursed. These are the face expressions showing disgust, anger and disapproval. Next, glitch. Glitch. It means a fault in machine that prevents it from working properly. मशीन में जो भी फॉल्ट आता है, जो भी कमी होती है, उसकी वजह से मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता. तो मशीन में जो भी फॉल्ट होता है उसे ग्लिच कहते हैं. बट हियर इन दिस लेसन ग्लिच मीन्स अ हिच और प्रॉब्लम. नेक्स्ट, स्क्विड. SQUEAKED. Squid. Squid. Shrigged. Shrigged. It means make a high pitched sound or cry. Next, slyly. Slyly means secretively. Weary. WEARY. Weary means tired. BLEARY. Bleary. Weary, bleary. Both these words rhymes with each other. BLEARY. Bleary means dull. CHORES. 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 Chores means work that must be done every day. Work that must be done every day. हम रोजिंदा जो भी कार्य करते हैं उसे chores कहते हैं. Nag. It means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. One who troubles someone as F troubles Patrick all the time by complaining and asking him to do something. Okay. Now, with the use of these new words, we will solve this puzzle. Okay. Use the clues given below to complete this crossword puzzle. Here are some clues given and with these we have to solve this puzzle. Okay. Now, first one, start with W.
Okay. Now we will read these words. First, very tired. Very tired means find out the word of for very tired from the lesson. Very tired means weary. W-E-A-R-Y. Weary. Okay. Now here number 7. It starts with H. Let's see what is there in number 7. A basket with a lid. Which word is used for these words? A basket with a lid. It's called a hamper. H-A-M-P-E-R. Hamper. Now here number 2. Let's see number 2. What is there in number 2? Had an angry look on the face. The expression which shows angriness. It starts from S. Which are the words that shows an anger, disapproval and disgust? Grimaced, scowled and pursed. Now here these words start with S. So here the answer is scowled. S-C-O-W-L-E-D. Now here number 6. Let's see what is there in number 6. Work that must be done every day, often boring. Everyday work that often we feel often boring. Tell me the word for it. Yes. Chores. C-H-O-R-E-S. Chores. Okay. Now number 3. It starts with B. What is there in number 3? Short trousers. Short trousers means breeches. Yes, B-R-E-E-C-H-E-S. Breeches. Okay. Now number 8. It starts with S. Let's see what is there in 8 number. Give a short, high-pitched cry. Give a short, high-pitched cry. There are 2 words for these phrases. Yes, which are they? Yes, tell me which are they? Squeaked and shrieked. Now here it starts with S. So the answer is shrieked. S-H-R-I-E-K-E-D. Shrieked. Very good. Now number 5. It starts with E. A small and naughty boy like a fairy. Yes, we all know the answer. It is an elf. E-L-F. Okay, now number 4 starts with G. A fault in a machine that prevents it from working properly. G-L-I. Yes. T-C-H. Glitch. Glitch means a fault in a machine that prevents it from working properly. Now we will discuss the question answers of this lesson. Look at here. Question 1. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? Okay, the answer is Patrick thought that his cat was playing with a little doll.
But in reality, it was a very small sized man and elf. पैट्रिक ऐसा सोच रहा था कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है, बट रियल में वो एक डॉल नहीं थी, पर क्या था? इट वॉज अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एंड एल्फ, पर वो तो एक एल्फ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? लिटिल मैन पैट्रिक की विश मानने के लिए क्यों तैयार हो गया? द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश एज पैट्रिक हैड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट, क्योंकि पैट्रिक ने कैट से उसकी जान बचा ली. नेक्स्ट, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक्स क्या चाहता था? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क. He did not like to do homework. So he made a wish that the little man should do all his homework till the end of the session. उसको तो पसंद नहीं था होमवर्क करना, वो ऐसी इच्छा रखता था कि जो लिटिल मैन है वो उसका सारा होमवर्क सेशन पूरा होने तक उसका सारा होमवर्क पूरा कर दे. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? In what subjects did the little man need help? The little man was weak in maths, English and history. The elf has no knowledge about maths, English and history. So he needed Patrick's help in these subjects. इसलिए उसको इन सब्जेक्ट्स में पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक उसे कैसे हेल्प करता था एल्फ को? पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम टू डू होमवर्क, कि ऐसे होमवर्क करो, ऐसे करो, ऐसे गाइड करता था. मोरोवर ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम. फिर वो लाइब्रेरी से बुक भी ला देता था और उसे रीड भी करता था. नाउ हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आप क्या सोचते हो कि किसने पैट्रिक्स का होमवर्क किया? लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? पैट्रिक ने अपने आप किया कि उस लिटिल एल्फ ने किया? अगर किसने किया तो उसका रीज़न आपको देना है यहाँ पे. इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क. किसने किया? पैट्रिक हिमसेल्फ डू ऑल द होमवर्क बिकॉज ही हैड टू असिस्ट द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स. क्योंकि उसको जो एल्फ है उसको अगेन एंड अगेन उसको गाइड करना पड़ता था और उसको बुक्स देनी पड़ती थी और उसे रीड भी कर देनी पड़ती थी. तो सभी कुछ कार्य किसने किया? पैट्रिक हिमसेल्फ. पैट्रिक ने अपने आप किया. सो द होमवर्क, all the homework done by Patrick. Okay. Now we will continue with other exercises in next session. Thank you.